This meeting is being recorded. सलाम अलैकुम। आज का बाइबल पठन लूका अध्याय 12 वचन 35 से। तैयार रहो, सदा तैयार रहो। Always be prepared. This is the same message that Paul, the evangelist, has given to his son in spirit. That is Timothy. Timothy, be prepared to preach the gospel at all times. We are in turbulent times. Many people are suffering in war zones. Many people are suffering with joblessness. Many people are suffering with hunger, thirst, poverty, suffering for basic amenities in most of the poor and impoverished nations in Africa and poor regions in India. As Christians, we should work with missionary zeal to extend our help to the poor, to the oppressed, to the people suffering with injustice. We should be voice of the voiceless. Sada tayar raho. సమీపమందు నుండునేమో చావు కాలము సదా నశించిపో వారికి సుభాగ్యము విధంబుజోపగోరియాసతోడ నిత్యము పెంచోచోడము చాటుదాము 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 సత్య సువార్తను కన్నీళ్లతో వితేడు వారలానందంబుతో నెనడుగోయుదూర నేడి వాగ్దనంబుతో మనన గోరి భక్తులార నిండు మైత్రితో మానవ ప్రేమతో చాటుదాము 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 క్రీస్తే సువాక్యము సమీపమందునందునేమో చావు కాలము సదా నశించిపోవు వారికి సుభాగ్యము విధంబుజుపగోర్యాసతోడ నిత్యము వేంపేంచుచుందము చాటుదాము 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 శ్రీసువాక్యము कर्म करने को सदा तैयार रहो और अपने दीपक जलाए रखो और उन लोगों के जैसे बनो जो ब्याह के भोज से लौटकर आते अपने स्वामी की प्रतिज्ञा में रहते हैं ताकि जब वह आए प्रतिज्ञा here it should be pratiksha. I do not know if I can edit
some tools are not appearing here to edit. It should be प्रतीक्षा. स्वामी की प्रतीक्षा में रहते हैं ताकि जब वह आए और द्वार खटखटाए तो वे तत्काल उसके लिए द्वार खोल सके. वे सेवक धन्य हैं जिन्हें स्वामी आकर जागते और तैयार पाएगा. मैं तुम्हें सच्चाई के साथ कहता हूं कि वह भी उनकी सेवा के लिए कमर कस लेगा और उन्हें खाने की चौकी पर भोजन के लिए बिठाएगा. If we are not tired, if we are not exhausted in doing good, this is the blessing we are going to receive. The Lord Himself will prepare the table before us and He will serve the meal to us in heaven. If we continue to serve faithfully and providing food to the hungry, the dying, the destitute. One of the journalists have asked Mother Teresa, the saint of the gutters, like this: Mother, you look so fragile, you look very weak. Being very weak, being so fragile, how can you provide and how can you cater to the needs of thousands of orphans, thousands of sick people? Then Mother Teresa, in all her humility, answered the journalist that if I do not pray for 4 hours a day, I will not be able to provide to the needs of multitudes even for at least a week's time, which I have been doing for years. All this is possible to provide the love, to provide the gentle touch, to provide the gentle care, to provide food to the hungry, to provide medicine to the sick. All this is possible because of fervent and effectual prayer in the name of Jesus Christ. वे सेवक धन्य हैं जिन्हें स्वामी आकर जागते और तैयार पाएगा. मैं तुम्हें सच्चाई के साथ कहता हूं कि वह भी उनकी सेवा के लिए कमर कस लेगा और उन्हें खाने की चौकी पर भोजन के लिए बिठाएगा. वह आयो वह आएगा और भोजन कराएगा. वह चाहे आधी रात से पहले आए और चाहे आधी रात के बाद, यदि उन्हें तैयार पाता है तो वे धन्य हैं. इस बात के लिए निश्चित रहो कि यदि घर के स्वामी को यह पता होता कि चोर इस घड़ी आ रहा है तो वह उसे अपने घर में सेंध नहीं लगाने देता. सो तुम भी तैयार रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र ऐसी घड़ी आएगा जिसे तुम सोच भी नहीं सकते. विश्वास पात्र सेवक कौन? Who is the faithful servant? నా జీవిత కాలమంతా నే సాగదయేసునితో. నా జీవిత కాలమంతా యేసుతో నడిచెదా, యేసుతో గడిపెదా, యేసుతో నడిచెదా, యేసుతో గడిపెదా, పరమును చేరంగానే వెళ్ళదా, హానోకు వలె సాగెదా, సాగిద యేసునితో. నా జీవిత కాలమంతా నే సాగెద యేసునితో. నా జీవిత కాలమంతా వెనుక శత్రువు వెంటాడినను, వెనుక శత్రువు వెంటాడినను, ముందు సముద్రము ఎదురొచ్చిన
ಮೋಶೆವಲೆ ಸಾಗೆದ ಸಾಗೆದ ಯೇಸುನಿತೋ నా జీవిత కాలమంతా నే సాగెద యేసునితో నా జీవిత కాలమంతా తల్లి విడచిన తండ్రి మరచిన తల్లి విడచిన తండ్రి మరచిన బంధువులే నన్ను వెలివేసిన బలవంతునితో సాగెదా నిసాగెద యేసునితో జీవిత కాలమంతా నిసాగెద యేసునితో నా జీవిత కాలమంతా లోకపు శ్రమలో నన్నెదిరించిన లోకపు శ్రమలో నన్నెదిరించిన కఠినులు రాళ్లతో హింసించిన కఠినులు రాళ్లతో హింసించిన స్టెఫెనో వలె సాగెదా సాగెద యేసునితో నా జీవిత కాలమంతా సాగెద యేసునితో నా జీవిత కాలమంతా లోకపు శ్రమలు నన్నెదిరించిన కఠినులు రాళ్లతో హింసించిన స్టెఫెనో వలె సాగెదా సాగెద యేసునితో జీవిత కాలమంతా బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైన మేలే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైన మేలే క్రీస్తుకే హత సాక్షిగా మారెదా క్రీస్తుకే హత సాక్షిగా మారెదా ఔరు వలె సాగెదా సాగెద యేసునితో జీవిత కాలమంతా సాగెద యేసునితో నా జీవిత కాలమంతా worship Stephen, Paul, great servants. God himself is testifying regarding Moshe, regarding the faithfulness of Moshe. Moshe is faithful in all my household. Moshe is the meekest person among all the people on the face of the earth. What is your testimony in the presence of God? What is my testimony in the sight of God? What men and women, what our friends, what our family members are talking about us is secondary. First of all, what we are in the sight of God. Because God is unchanging, because God is truthful, because God is impartial. His testimony stands forever. God has a word to say regarding Moshe. God has a word to say regarding Caleb. God has a word to say regarding David. God has a word to say regarding Jesus Christ. Regarding Jesus Christ, God is telling that Jesus is my beloved Son, in whom I am well pleased. In what context God is speaking? When Jesus Christ was baptized in the waters of Jordan, what has happened? When Jesus Christ was just coming out of the waters of Jordan, the Holy Spirit descended from heaven onto Jesus Christ in the form of a dove, and everyone near this site received a voice, heard a voice stating that this is my beloved Son in whom I am pleased, I am well pleased. Such is the wonderful testimony
God gave regarding Jesus Christ. Regarding David, God is telling that David is a man of my own heart. దావీదు నా హృదయానుసారుడైనటువంటి మనుష్యుడు. So, what is your testimony? What is my testimony? We should be very careful. इस पर यीशु ने कहा, तो फिर ऐसा विश्वास पात्र, बुद्धिमान, प्रबंध अधिकारी कौन होगा जिसे प्रभु अपने सेवकों के ऊपर उचित समय पर उन्हें भोजन सामग्री देने के लिए नियुक्त करेगा। वह सेवक धन्य है जिसे उसका स्वामी जब आए तो उसे वैसा ही करते पाए। We should continue to do the work that God has given us even unto the very day of the return of Jesus Christ. When our God finds us doing His will, when He arrives, we are indeed blessed. We are indeed blessed, and we will be taken to heaven, and a table will be prepared before us, and God Himself will serve us at the table. मैं सच्चाई के साथ तुमसे कहता हूं कि वह उसे अपनी सभी संपत्तियों का अधिकारी नियुक्त करेगा, किंतु यदि वह सेवक अपने मन में यह कहे कि मेरा स्वामी तो आने में बहुत देर कर रहा है, और वह दूसरे पुरुष और स्त्री सेवकों को मारना पीटना आरंभ कर देता, तदा खाने पीने के मदमस्त होने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आ जाएगा जिसकी वह सोचता तक नहीं, एक ऐसी घड़ी जिसके प्रति वह अचेत है। फिर वह उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा और उसे अविश्वासियों के बीच स्थान देगा। वह सेवक जो अपने स्वामी की इच्छा जानता है, वह सेवक जो अपने स्वामी की इच्छा जानता है और उसके लिए तत्पर नहीं होता, या जैसा उसका स्वामी चाहता है वैसा ही नहीं करता, उस सेवक पर तीखी मार पड़ेगी। किंतु वह जिसे अपने स्वामी की इच्छा का ज्ञान नहीं और कोई ऐसा काम कर बैठे जो मार पड़ने योग्य हो, तो उस सेवक पर हल्की मार पड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक उस व्यक्ति से जिसे बहुत अधिक दिया गया है अधिक अपेक्षित किया जाएगा। उस व्यक्ति से जिसे लोगों ने अधिक सौंपा है उससे लोग अधिक ही मांगेंगे। यीशु के साथ असहमति। मैं धरती पर एक आग भड़काने आया हूं। मेरी कितनी इच्छा है कि वह कदाचित अभी तक भड़क उठती। मेरे पास एक बपतिस्मा है जो मुझे लेना है, जब तक यह पूरा नहीं हो जाता। मैं कितना व्याकुल हूं। तुम क्या सोचते हो मैं इस धरती पर शांति स्थापित करने के लिए आया हूं? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तो विभाजन विभाजन करने आया हूं, क्योंकि अब से आगे एक घर के अब से आगे एक घर के 5 आदमी एक दूसरे के विरुद्ध बट जाएंगे, 3 2 के विरोध में और 2 3 के विरोध में हो जाएंगे। पिता पुत्र के विरोध में और पुत्र पिता के विरोध में, माँ बेटी के विरोध में और बेटी माँ के विरोध में।
सास बहू के विरोध में और बहू सास के विरोध में हो जाएंगी। समय की पहचान। फिर वह भीड़ से बोला, जब तुम पश्चिम की ओर से किसी बादल को उठते देखते हो तो तत्काल कह उठते हो वर्षा आ रही है, और फिर ऐसा ही होता है। और फिर जब दक्षिणी हवा चलती है तुम कहते हो गर्मी पड़ेगी, और ऐसा ही होता है। अरे कपटियों, तुम धरती और आकाश के स्वरूपों की व्याख्या करना तो जानते हो, फिर ऐसा क्यों कि तुम वर्तमान समय की व्याख्या करना नहीं जानते? अपनी समस्याएं सुलझाओ। जो उचित है जो उचित है उसके निर्णायक तुम अपने आप क्यों नहीं बनते? जब तुम अपने विरोधी के साथ अधिकारियों के पास जा रहे हो तो रास्ते में ही उसके साथ समझौता करने का जतन करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायाधीश के सामने खींच ले खींच ले जाए और न्यायाधीश तुम्हें अधिकारी को सौंप दे, और अधिकारी तुम्हें जेल में बंद कर दे। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वहां से तब तक नहीं छूट पाओगे जब तक अंतिम पाई तक न चुका दे। लुका सुविशेष अध्याय 13। मन बदलो। This is the sum and substance of all the ministry of Jesus Christ. Repent and have a new heart and inherit the kingdom of God. Repentance and change of heart. This is the sum and substance of the ministry of Jesus Christ. And all those that repent for their wrongdoings and receive a new heart from Jesus Christ will inherit everlasting life and will be delivered from the judgment, the hell. मन बदलो। उस समय वहां उपस्थित कुछ लोगों ने यीशु को उन गलीलियों के बारे में बताया जिनका रक्त पिलातुस ने उनकी बलियों के साथ मिला दिया था। सो यीशु ने उनसे कहा, तुम क्या सोचते हो कि ये गलीली दूसरे सभी गलीलियों से बुरे पापी थे क्योंकि उन्हें ये बातें भुगतनी पड़ी? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम सब भी वैसी ही मौत मरोगे जैसे वे मरे थे। या उन 18 व्यक्तियों के विषय में तुम क्या सोचते हो जिनके ऊपर
शिलोह के बुर्ज ने गिर कर उन्हें मार डाला। क्या सोचते हो वे यरूशलेम में रहने वाले दूसरे सभी व्यक्तियों से अधिक अपराधी थे? नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं कि यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी वैसे ही मरोगे। Change of heart and repentance. This is the sum and substance of all the gospel. मन फिराओ। निष्फल पेड़। फिर उसने यह दृष्टांत कथा कही। किसी व्यक्ति ने अपनी धाक की बारी में अंजीर का एक पेड़ लगाया हुआ था, सो वह उस पर फल पोंछता आया, पर उसे कुछ नहीं मिला। अंजूर मीन्स फिक्स। इस पर उसने माली से कहा, अब देख, मैं 3 साल से अंजीर के इस पेड़ पर फल ढूंढता आ रहा हूं, किंतु मुझे एक भी फल नहीं मिला, सो इसे काट डाल। यह धरती को यूं ही व्यर्थ क्यों करता रहे? माली ने उसे उत्तर दिया, है स्वामी, इसे इस साल तक इस साल तब तक छोड़ दे जब तक मैं इसके चारों तरफ गड्ढा खोद कर इसमें खाद लगाऊं। फिर यदि यह अगले साल फल दे तो अच्छा है, और यदि नहीं दे तो तू इसे काट सकता है। शब्द के दिन स्त्री को निरोग करना। हीलिंग ऑन द डे ऑफ सब्बात। किसी प्रार्थना सभा में सप्त के दिन यीशु जब उपदेश दे रहा था, तो वही एक ऐसी स्त्री थी जिसमें दुष्ट आत्मा समाई हुई थी। अनक्लीन स्पिरिट्स आर रियल, demonic forces are real, Satan, the existence of Satan is real. तो वही एक ऐसी स्त्री थी जिसमें दुष्ट आत्मा समाई हुई थी, जिसने उसे 18 वर्षों से पंगु बनाया हुआ था। 18 years, for 18 years this woman was held by the unclean spirit. वह झुककर कुबड़ी हो गई थी और थोड़ी सी भी सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे जब देखा तो उसे अपने पास बुलाया और कहा, यीशु ने उसे जब देखा तो उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे स्त्री, तुझे अपने रोग से छुटकारा मिला। यह कहते हुए उसके सिर पर अपने हाथ रख दिए और वह तुरंत सीधी खड़ी हो गई। वह परमेश्वर की स्तुति करने लगी। यीशु ने, क्योंकि सप्त के दिन उसे निरोग किया था, इसलिए यहूदी प्रार्थना सभा के नेता ने क्रोध से भरकर लोगों से कहा, काम करने के लिए 6 दिन होते हैं, सो उन्हीं दिनों में आओ और अपने रोग दूर करवाओ, पर सब के दिन निरोग होने मत आओ। प्रभु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, ओ कपटियों, क्या तुम में से हर कोई सब्त के दिन अपने बैल या अपने गधे को बाड़े से निकालकर पानी पिलाने कहीं नहीं ले जाता? अब यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है और जिसे शैतान ने 18 साल से जकड़ रखा था, क्या इसको सब्त के दिन इसके बंधनों से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए था? जब उसने यह कहा तो उसका विरोध करने वाले सभी लोग लज्जा से गड़ गए। उधर सारी भीड़ उन आश्चर्यपूर्ण कामों से जिन्हें उसने किया था आनंदित हो रही थी। आश्चर्य करोड़ यीशु, अद्भुत करोड़ क्रिस्तो, आश्चर्य करोड़ यीशु, अद्भुत करोड़ क्रिस्तो। Jesus is a wonder working God. In this passage in Luke chapter 13, we saw that the daughter of Abraham means not the sister of Isaac.
That is the confusion. Daughter of Abraham means belonging to the household of Abraham because of faith. The woman had faith in God, and Jesus saw the faith. How Jesus could identify that she is Abraham's daughter? Because on Shabbat day, this woman, in spite of her sickness, in spite of her bent back, her back is bent because of possession by unclean spirits, demonic forces. She could not raise her back for 18 long years. This world where we live is filled with many dangerous, unseen, hidden foes. How can we tackle the unseen, hidden foes? Unclean spirits, demonic forces, satanic forces, witchcraft, black magic. Don't we have black magicians? Don't we have people that practice witchcraft? Don't we have people that consult dead spirits? Spirits of people that are dead? Yes, indeed. Are we trying to do harm to our neighbor by practicing black magic, by practicing witchcraft, by consulting with the demonic forces? If so, we will be, not we. If so, those that do such things will be measured in the same measure. We should never ever consult unclean spirits. We should never ever consult the spirits of dead people regarding the future. The dead spirit is open. For example, a person is dead. Once the spirit is separated from him, everything will be quite visible to that dead spirit. What I mean to say is the spirit of the dead man, to him everything is very, very visible. Means the future is known. For us, it is not known because we are bound in the body. For example, I'll tell you an instance. There are many instances in the Bible. Shaul, the king over Israel, is consulting the demon-possessed woman, Karnapisachamu Kaligina. Endor. Endor is the place where there is a witch possessed by demon. Endor, Shaul is going to Endor and consulting the witch possessing the unclean spirit. What will happen tomorrow? All my kingdom is surrounded by the enemy's armies. What will be the future of Israel? What will be my future? Will I prevail over my enemies? God is not answering Shaul through prophets. God remained silent. Then the witch, possessed by unclean spirit, possessed by demon, is answering by with the through the devil that she possessed. And Shaul is asking this woman possessed by demon to bring back the spirit of Samuel. By then, prophet Samuel was dead and buried. And the spirit of Samuel is in rest in the lower parts of the earth. And when this demon asks Samuel to come back to have conversation with Shaul, and this demon-possessed woman, once the devil in her is active, could identify that the person that wanted to speak to Samuel's spirit is none other than the king of Israel, Shaul. She was frightened, she was astonished, she was afraid. Oh, you are the king. Why did you come in a different attire? Why do you hide your identity? You are the king, you are the Shaul. Why did you come to me as an ordinary person in disguise? You see, for devil it is very clear. Devil knows who is who. The unclean spirits know who is who. Likewise, the angel also knows. The Holy Spirit can also identify people. Even though Shaul has come in disguise as an ordinary person to talk to the spirit of Samuel, even though he is consulting the witch in Endor, he is not hidden. This witch is telling that you are Shaul, the king.
of Israel, why did you come in a disguise? Then Shaul says, I will not harm you. Do not fear. The existence of Israel is a threat because of the enemy's army surrounding Israel. What I want from you is bring the spirit of prophet Samuel. I want to talk to Samuel and know the future of Israel. I want to know what will happen in the war. Who is going to win? Who is going to lose? The war that is going to happen tomorrow. Then the witch, the demon, brings the spirit of Samuel from the lowest parts of the earth that is resting, and she could see a person worn in a blanket, and she says, I see an old man with worn blanket who is worn with a blanket. Then the king Shaul says, yes, it is indeed prophet Samuel. And then he prostrates before the spirit of Samuel and honors Samuel. Then Samuel says, why did you call me from my rest? Shaul, tomorrow by this time you will be with me. రేపు ఈ సమయమునకు నీవు నా దగ్గర ఉండువు అని చెప్పి Samuel in spirit is able to see all that is hidden to human beings, to human world. What Samuel meant by that is you will be caught hold by the enemy's armies and will be killed. You will be no more. Tomorrow is your last day. As Samuel prophet has said, it will happen. Why you want to consult me when God himself has forsaken you? దేవుడే నిన్ను ఎడబాసి ఉండగా నీవు నన్ను అడగవలసినటువంటి అవసరత ఏమి? Why did you disturb me? Why did you disturb me? Samuel is asking Shaul, why did you disturb me? నన్ను ఎందుకు నా విశ్రాంతిలో నుంచి తొందర చేయుచున్నావు? రేపు ఈ సమయమునకు నీవు నిశ్చయముగా నా యొద్దనుందువు. By tomorrow, this time, you will be with me. Means you will die. You will not be on the face of the earth. जब उसने यह कहा तो उसका विरोध करने वाले सभी लोग लज्जा से गड़ गए. उधर सारी भीड़ उन आश्चर्यपूर्ण कर्मों से जिन्हें उसने किया था आनंदित हो रही थी. स्वर्ग का राज कैसा है? How does the heaven look like? So उसने कहा परमेश्वर का राज कैसा है और मैं उसकी तुलना किससे करूं? वह सरसों के बीज जैसा है जिसे किसी ने लेकर अपने भाग में बो दिया. वह बड़ा हुआ और एक पेड़ बन गया. फिर आकाश की चिड़ियों ने उसकी शाखाओं पर घोंसले बना लिया. घोंसला मीन्स नेस्ट. उसने फिर कहा परमेश्वर के राज्य की तुलना मैं किससे करूं? यह उस खमीर के समान है जिसे एक स्त्री ने लेकर 3 भाग आटे में मिलाया और वह समूचा आटा खमीर युक्त हो गया. संकरा द्वार, यीशु नैरो वे. यीशु जब नगरों और गांवों से होता हुआ उपदेश देता यरूशलेम जा रहा था, तभी उससे किसी ने पूछा, प्रभु क्या थोड़े से ही व्यक्तियों का उद्धार होगा? लॉर्ड, ओनली ए फ्यू विल बी सेव्ड. उसने उससे कहा, संकरे द्वार के प्रवेश करने को हर संभव प्रयत्न करो. एंटर थ्रू द नैरो गेट. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू एंटर थ्रू द नैरो पाथ. क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूं कि भीतर जाने का प्रयत्न बहुत से करेंगे पर जा नहीं पाएंगे. भीतर मीन्स to enter into the heaven. जब एक बार घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर देता है तो तुम बाहर ही खड़े दरवाजा खटखटाते रहोगे, हे स्वामी हमारे लिए दरवाजा खोल दे. किंतु वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता तुम कहां से आए हो. तुम तब कहने लगोगे, हमने तेरे साथ खाया, तेरे साथ पिया, तूने हमारी गलियों में हमें शिक्षा दी. पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता तुम कहां से आए हो. अरे कुकर्मियों, मेरे पास से भाग जाओ. तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब तथा अन्य सभी नबियों को परमेश्वर के राज्य में देखोगे, किंतु तुम्हें बाहर
ढकेल दिया जाएगा तो वहां बस रोना और दांत पीसना ही होगा। फिर पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग परमेश्वर के राज में आ आकर भोजन की चौकी पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ध्यान